Anji and welcome back. Today we're going to talk about some football or football mein we're going to talk about Arsenal Football Club. I've been supporting Arsenal since 2003-2004. Invincibles वाला जो season था I started right there and then और वो तो एक बहुत ही high point था in Arsenal's history of course और मेरी supporting journey में भी and I've seen some terrible lows as well और last season अगर Arsenal FA Cup ना जीतता और फिर Community Shield ना जीता so it would have been a disaster 8th position. Arsenal was considered to be Champions League regular. Arsene Wenger के under the 16-17 seasons हर सीजन में वो चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाई करते थे बट 4 साल हो गए वी हैवंट सीन चैम्पियंस लीग और आज आर्सेनल की मैं बात जो करने जा रहा हूँ वो मैं करने जा रहा हूँ आर्सेनल के स्क्वाड पे ट्रांसफर्स क्या इन हुए हैं क्या आउट हुए हैं और पोटेंशियल इन्स एंड आउट्स क्या हैं आर्सेनल के 2-3 जब आप लोगों के पास ये वीडियो आएगी 2-3 दिन होंगे ट्रांसफ़र विंडो ख़त्म होने में एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन इन दिस ट्रांसफ़र विंडो और आर्सेनल से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा रूमर्स भी हैं और आई एम गोना रेट द रूमर्स कितने चांसेस हैं आने के डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली ऑल द रूमर मिल और कितने लेजिटिमेट सोर्सेज से आ रहे हैं वो सारा करके मैं आपको चांसेस बताऊंगा. अभी चलाते हैं हम इंट्रो एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड. Anji, so firstly, let's talk about which players have come into Arsenal. Obviously, everyone knows Willian came in from Chelsea for free. उसके बाद Gabriel Magalhaes आए थे from Lille on reported 22 million euro deal. उसके बाद Arsenal ने एक बैकअप गोलकीपर साइन किया Runar Alex Runarsson Dijon FC से for a reported 1 to 1.5 millions. तो अभी तक ये Arsenal में ट्रांसफर्स हुए हैं और ट्रांसफर आउट जो हैं वो भी 3 प्लेयर ही हुए हैं. उसमें सबसे पहले नाम आता है एमी मार्टिनेज का आर्सेनल के बैकअप गोलकीपर जो थे और आफ्टर लेनोज इंजरी अगेंस्ट ब्राइटन आफ्टर द लॉकडाउन उसके बाद एमी मार्टिनेज वाज आवर रेगुलर एंड ही वॉन द एफए कप एंड कम्युनिटी शील्ड विद अस और आर्सेनल फैन बेस में एक वो कल्ट हीरो है एंड आई लव दैट गाय. ही इज बीन अ ग्रेट सर्वेंट. ही सर्व्ड आर्सेनल फॉर वेल ओवर 10 years बट ही हैज मूव्ड ऑन टू एस्टन विला फॉर अ रिपोर्टेड 20 million euro डील. उसके बाद आते हैं हेनरिक मिखतारियन जो कि बड़े फेमस स्वैप डील जो कि डिजास्टर स्वैप डील कहा जाता है बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल. सैंचेज यूनाइटेड गए थे और मिखतारियन रिटर्न में आर्सेनल आए थे. वो ही वॉजंट अ सक्सेस एट आर्सेनल एट ऑल और फ्लैशेस थे कुछ मैचेस में एक दो उनके अच्छी मूव्स एक दो अच्छे थ्रू बॉल्स निकालते थे बट he wasn't really what we expected him to be. So Arsenal decided to terminate his contract and he moved on to AS Roma where he played on loan for the last season as well. और तीसरे जो गए हैं वो लोन पे गए हैं आर्सेनल के ग्रीक डिफेंडर यंग ग्रीक डिफेंडर कॉन्स्टेंटिनोस मैव्रोपोनोस और वो जब आए थे काफ़ी ज़्यादा हाइप थी कि काफ़ी बिल्ड शेल्ड और he looked like a good prospect for the future but sadly it didn't turn out so good for him as well. So ये अभी तक transfer activity confirm हो चुकी है आर्सेनल की. उसके बाद अब हम चलते हैं potential transfers पे आर्सेनल के. Okay, so let's talk about the potential outs first this time. Potentially Kolasinac शायद जब ये वीडियो रिलीज हो he might have completed his transfer लेकिन फिलहाल he is reported to be on the move और वो जा रहे हैं Bayern Leverkusen for a reported 10 million euro fee. अब when Kolasinac joined Arsenal he joined from Schalke 2-3 years ago और he was in the Bundesliga team of the season that year and there were very high expectations of him और वो free transfer पे आए थे which was seen as a coup. तो it did work out for him. His best performance in Arsenal was when he defended Mesut Ozil from those robbers जो भी attack हुआ था Ozil पे. Kolasinac defended him. That was his best performance. और I'm not particularly sad to see him go. He has been a good servant. He wasn't up to the mark. He didn't live up to his standards. And I feel moving back to Germany, Bayern Leverkusen में एक अच्छा group मिलेगा उन्हें. He may be able to perform there. और सेकेंडली जो पोटेंशियल आउट है
वो है लूकस टोरेरा का। लूकस टोरेरा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था व्हेन ही केम फ्रॉम सैम्पडोरिया। 25 मिलियन यूरोस में शायद आए थे, और he looked like a player that Arsenal exactly needed for so long, और प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर थे, लेकिन he just couldn't adjust to life in England in my opinion. और Lucas Torreira की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, it's always going to be that wonderful goal against Tottenham in a 4-2 derby win at the Emirates Stadium, and he scored his debut goal और बहुत ही अच्छा गोल मारा था. So Torreira has been a good servant as well. Emery ने actually उसे पूरा का पूरा ruin कर दिया था. Torreira was supposed to be a perfect DM, but Emery saw number 10 in him and he tried to convert him into that, but it wasn't his forte. So Torreira reportedly is moving to Atletico Madrid. अब इस डील के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आए हैं. I'd say around 70%. Arsenal are looking for a swap deal of some kind with Thomas Partey. उस पे हम बाद में आते हैं, लेकिन on its own, in my opinion, 70% ये डील के चांसेस हैं होने के. सो दीज आर द 2 ट्रांसफर आउट्स. उसके अलावा पोटेंशियल आउट्स जो हैं वो एमील स्मिथ रो ऑन लोन है. ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड यंगस्टर, बट ही कुड मूव ऑन टू लोन. एस्टन विला तो अब उन्होंने रॉस बार्कली लोन पे ले लिया, बट दे वर रिपोर्टेडली इंटरेस्टेड इन हिम. उसके अलावा साउथहैम्पटन और फुलम जो है, they really like the look of Emil Smith Rowe, and he's a very wonderful player. And if Arsenal do decide to move him out on loan, तो Premier League में Southampton and Fulham can be a good breeding ground for him. उसके बाद जो चौथे प्लेयर मैं कहूँगा who can move out is Socrates, जो कि who is in constant constant negotiations with Napoli. Napoli wanted Socrates if Kalidou Koulibaly moved to Manchester City, but that couldn't happen. City opted for Ruben Diaz instead, so that move looked like it was off. But recently West Ham have emerged as suitors for their another defender, Maximovic. So if Maximovic moves to Napoli, that could potentially open a gap for another defender, and Socrates can move over there. Chances for this deal are 50% in my opinion. Uske baad hai Shkodra Mustafi, who has not been good for Arsenal, but he is a World Cup winner. वो उनके साथ हमेशा ज़िंदगी में रहेगा. Anyways, flashes of brilliance थोड़े बहुत उनके नज़र आते हैं. जब शुरू में आए थे, Arsenal went on an unbeaten run of 20 or 21 matches with him in the team, लेकिन that soon turned out to be great, you know. But Mustafi is on his way, 50% chances move on his way to Italian club Torino for a reported 5 to 10 million pound deal. Now this will be a very good deal for Arsenal to get him off the wage books, and he opens up a spot for another player to come in. तो ये थे reported जो हैं potential outs. एक और out है, लेकिन वो उसको मैं link करूँगा next segment के साथ. Now let's talk about potential ins. सबसे पहले तो सबको पता ही है हुसम उआर, अगर मैंने नाम उसका सही बोला है, बट हुसम उआर शायद मैं जब ये वीडियो रिलीज हो, he might have signed for Arsenal. I'll rate him as 90% done. 90% chances है इस डील के होने के, क्योंकि जो लियोन के प्रेसिडेंट हैं, he just recently said in an interview after they signed Lucas Paqueta, Lyon ने Paqueta sign किया, he said that 2 players are likely to leave, and one of them is Houssem Aouar, the other is Jeff René Adelaide. Houssem Aouar से शुरू से ही ट्रांसफर विंडो जब से ओपन हुई, Arsenal have been linked, और reportedly 35 million euros मांग रही है लियोन. And if Arsenal do manage to get this deal through, it'll be great for Arsenal, because we have seen the lack of creativity की मैं आपको example दूँ. This season Oba has only 4 shots on goal, 4 chances मिले उन्हें to have shots at goal. He's hit them all on target and he scored 1 goal. So if we find that creativity in the middle of the park, तो उसकी वजह से Oba can open up, Laka can open up, and Pepe, Willian, whoever's on the right can open up. So Houssem Aouar 90% मेरे लिहाज से done है. Second भी
जब से ट्रांसफर विंडो ओपन हुई है उससे लिंक्ड है हम थॉमस पार्टी. He looks like the perfect player for Arsenal in my opinion. Ever since Vieira left, Arsenal fans have been crying for one thing to replace Vieira, and we haven't been able to done that. We've tried multiple players. I felt that Abu Diaby had that in him, but unfortunately injuries ruined his career. Then came in Matthew Flamini, who wasn't up to the mark, to be honest. Francis Coquelin, who had great 6 months and he faltered off. So Arsenal haven't been able to replace Vieira. So Thomas Partey looks like the perfect player. He is box-to-box midfielder who can tackle the ball and who can spread the play forwards. So Thomas Partey के जो मैं chances हैं, Atletico Madrid want 50 million euros जो उनका release clause है, they want him to get they want money 50 million euros for him. And what Arsenal are trying to do is to offload Torreira to Atletico Madrid, and they're asking for some sort of compensation for Atletico Madrid to lower the release clause of Thomas Partey. But that's still in the works. Hopefully it'll be done. इसके chances मैं कहूँगा 70%. And the final potential in जो है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो प्लेयर विल्फ्रेड ज़हा की है. विल्फ्रेड ज़हा has been linked with Arsenal for 2-3 साल हो गए. He's been linked to Arsenal and Arteta seems to like him. And imagine if Arsenal do manage to sign Zaha, Oba can play down the middle with Pepe or Willian down the right. It'll create a fearsome front three with Hosam, Aouar and Partey. भाई top 4 confirm मैं कहता हूँ अगर ये होता है. अगर नहीं होता तो फिर चांसेस बुरे हैं. वो मैं एक और वीडियो में बताऊंगा. Anyways, Zaha के जो chances हैं आने के, that will be 40% in my opinion. और 1 year loan deal plus an obligation to buy, fee is undisclosed at the moment. ये chances हैं. और if Arsenal do manage to get this over the line, Zaha आ जाता है, so this frees up the space जो कि रीस नेल्सन को है Arsenal लोन पे बेच सकता है. Although I really like Reece Nelson, but he still lacks that killer instinct और थोड़ा सा उन्हें पॉलिश होने की ज़रूरत है. और बल्कि कुछ tier 2 rumors तो ये भी कह रहे थे कि Arsenal are willing to let Reece Nelson go for 60 million. Now this seems a bit ridiculous, but those are the rumors. It's not my call. So these were the ins outs Arsenal की transfer market में अभी तक ये activity रही है. जब ट्रांसफर विंडो ख़त्म हो जाएगी एक और वीडियो आर्सेनल पे मैं सिर्फ ट्रांसफर मार्केट की बनाऊंगा कि व्हाट डिड आर्सेनल डू एंड हाउ कैन आर्सेनल लाइन अप. और उसके बाद जब ट्रांसफर मार्केट ख़त्म हो जाएगी एक ओवरऑल वीडियो भी बनेगी जिसके अंदर सारी डिटेल्स उनकी प्रीमियर लीग की अलग बनाऊंगा, सीरी आ की अलग, ला लीगा की अलग, और हाँ ये 3 लीग्स फ्रेंच लीग को नहीं. Anyways, this was the video. If you did enjoy it, hit on that like button, subscribe to my channel and share it with your friends. I'll see you next time. Until then, Allah Hafiz.